वालेकुम अस्सलाम। अक्टूबर 2024 हम कर रहे थे। 1 आवर 45 मिनट्स का होगा ये एग्ज़ाम। क्या याद है हमें कि कब हो रहा है ये? हम्म। व्हाट इज़ द डेट फॉर पेपर 3? बॉयज़ एंड गर्ल्स, व्हाट इज़ द डेट ऑफ पेपर 3 एंड हाउ मैनी डेज लेफ्ट? 16th में है, ठीक है जी, डेट तो हमें पता चल गई। अब इसके हिसाब से कितने दिन रह गए? 24 जनवरी आज है। तो 24 जनवरी अगर आज है तो इसके हिसाब से फेब्रुवरी मार्च अप्रैल, ओ माय गॉड, ओनली 3.5 months लेफ्ट। द काउंट डाउन हैज़ ऑलरेडी बिगन एंड इट्स टाइम टू gear up and start self study, start to practice past papers, right? और इसमें हमने जो केस किया था हबीशा क्लीन कुकिंग का, 112 दिन टू बी वेरी स्पेसिफिक, यस। इसमें क्या था, हबीशा क्लीन कुकिंग का हम केस कर रहे थे ना, केस याद होगा। अब तो ये हमने इसके कितने क्वेश्चंस कर लिए थे? इसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था। ये आ गया क्वेश्चन 1, फिर 2, फिर 3 भी कर लिया पूरा। आज हमें इसका करना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या है? हबीशा, हबीशा क्लीन कुकिंग, HCC। If you remember the case, this girl graduated with a degree in emotional intelligence. She founded HCC in 2015 as a social enterprise. She was based in country E, and her mission was to save the environment one meal at a time. And the first product that she launched was Cook Bag, and she was targeting low income households in rural locations. And the cook bag is made of premium recycled materials and allows food that has been heated on stoves to finish cooking without extra energy. So basically, she was trying to save on the energy by selling half cooked meals. And by 2024, the cook bags sold, number of cook bags sold was 250,000. एंड ग्रेजुअली एक्सपैंड किया था हमने, एक नया प्रोडक्ट भी लॉन्च किया। बड़ा सक्सेसफुली ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था हमारा। फिर एम्प्लॉयज़ को बड़ा हम ख्याल रखते हैं, अगर याद हो। और Abiba believed skilled employees are central to HCC success. The 60 factory employees are organized into quality circles and given paid time to meet considered problems. And clearly, the productivity was going up. If you remember, the company was quite well in managing their employees because most of the people were really satisfied. And then she was also planning to launch a new restroom and a canteen for the staff, in which for she was planning to expend $500,000. And there was a new competition in the market. Uh, yeah, so there was a new competitor with the name of CA, a multinational business. CA was not a social enterprise, but it had a very good reputation of CSR. And then we were given some satisfactory profits, the data related to numbers. And Abiba is satisfied with HCC's financial performance, but the finance director was worried. The return on capital employed was decreasing, if you remember. And now Habiba was planning further expansion in country K. An international expansion was about to happen. And HCC uses digital marketing and social media to increase awareness of its products. ठीक है जी, याद आ गया ना, रीजनल सेल्स एजेंट को भेज के डेमोन्स्ट्रेशंस कराते थे हम। And now they were deciding how to go for international markets. So the case was quite interesting. And now we have to start off with this question number 4. And क्वेश्चन किसके बारे में है? वो है रेफर टू। तुम्हारे सामने ये पेपर होना चाहिए। आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू गाइज हैव द प्रिंट आउट ऑफ दिस पेपर। इफ़ यू आर अटेंडिंग द क्लास देन यू शुड हैव अ प्रिंट आउट ऑफ दिस पेपर। और पुरानी जो इस पेपर की क्लासेस हैं, सबसे पहली क्लास में हमने केस रीड किया था, फिर क्वेश्चन 1, फिर क्वेश्चन 2, फिर क्वेश्चन 3। इस वाले जो ये अक्टूबर 2024 का जो पेपर है, वेरिएंट 32, इसकी काफ़ी क्लासेस हो भी चुकी हैं। अभी पास्ट में मैंने वो सारी यूट्यूब पे अपलोड की हुई हैं, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। अगर तुम, ज़ाहिर है, अब यूट्यूब चैनल अगर फॉलो कर रहे हो प्रॉपरली, उस पर बहुत सारी वीडियोस में डाले जा रहा हूँ रोज़ के रोज़। तो तुम, इजी तरीका ये है कि जब चैनल पे जाओगे, प्लेलिस्ट्स का जो देखो ना ऑप्शन आ रहा है तुम्हारे पास, नीचे देख रहे हो ये प्लेलिस्ट आ रही है। प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्लेलिस्ट में तुम्हें मिल जाएगी ये, जैसे बिजनेस A2 लेवल पेपर 3, अगर तुम्हें ये नज़र आ रही है। 88 वीडियोज़ हैं इसके अंदर, बिजनेस A2 लेवल पेपर 3। जो भी मेरी ये ऑनलाइन पास पेपर सेशन की क्लास होती है वो मैं इस प्लेलिस्ट में अपलोड कर देता हूँ। और इसमें तुम्हें सारे पेपर्स मिल जाएंगे। अगर तुम लेटेस्ट देख लोगे तो उसमें देखो, ये मैंने अपलोड की हुई है ना, A2 अक्टूबर, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, जो लास्ट में नज़र आ रही है। ठीक है, वैसे और भी प्रैक्टिस अगर करनी है तो तुम पुरानी वीडियोस उठा उठा के देखो, इसमें बहुत सारी वीडियोस हैं।
और साथ साथ इसको अटेम्प्ट करना शुरू कर दो, मे बी वन बाय वन वीडियो प्ले करो और लिखना शुरू कर दो घर पे. This would really help to improve you the writing skills. You should do it, I guess, right? And now let's see what the question is. Refer to refer to table 1.2. Calculate for 2023-2024 the operating profit margin. Okay, so we have to refer to table 1.2. Let's see where table 1.2 is. Okay, so it is related to the financial data and ratios. Okay, table 1.2 आ गया. और अबीबा इज satisfied with HCC's financial performance. ठीक है, मैं रीड कर रहा हूँ एक दफ़ा ताकि हम अच्छा आंसर लिख सकें. Abiba is satisfied with HCC's financial performance as the business is profitable and sales are increasing. Okay. However, the finance manager is concerned with the decrease in profits in 2024. He has prepared financial data for HCC to discuss with Abiba. He wants Abiba to agree to a strategy to increase profitability to secure HCC's future. ठीक है जी, फाइनेंस मैनेजर ने अबीबा को बोला है ब्रो सीन्स ऑफ है, हालात खराब है और हमें मिल लेना चाहिए. He thinks that some tough decisions will need to be taken. Table 1.2 shows selected financial data and ratios for HCC, and we have been given 2 सालों का डेटा 2022, 2023 एंड 2023, 2024. सबसे पहले अगर हम रेवेन्यू चेक करेंगे तो रेवेन्यू हमारा $10 million से बढ़ गया है, 10.8 पे आ गया है. Revenue increased by 8% and the cost of sales also increased, but the cost of sales has increased by 15% in this year, which shows what is the gross profit. ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा अगर रेवेन्यू 2023 की बात करूं. ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स करना होगा ना. रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स अगर हम कर लें, 10.8 माइनस 6.4, चलो अभी बताओ कैलकुलेटर, ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा. 4.4. ठीक है, और इसमें से अगर हम एक्सपेंसेस भी माइनस कर दें तो कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल्स टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं ना. ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं या फिर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इन टैक्स भी कहते हैं. तो ये बचाएगा $0.5 million. ओके. और 22 का, अगर मैं 2022-2023 वाले ईयर का निकालूं, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स 10 माइनस 4.55, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा लास्ट ईयर, 4.45. और फिर इसमें से एक्सपेंसेस भी माइनस कर दें, अगर 4.45 में से 3.85 माइनस कर दूं अगर, तो मेरा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हो जाएगा 0.6. ओह गॉड, लास्ट ईयर द ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाज $0.6 million. दिस ईयर वी आर मेकिंग द प्रॉफिट्स ऑफ $0.5 million. $5 लाख कमाए. 0.5 million का मतलब होता है $5 लाख. और कम हो गया है प्रॉफिट हमारा, वैसे 5 लाख भी कम नहीं होता, लेकिन ओवरऑल द प्रॉफिट हैज जस्ट गॉन डाउन. And if we see, the interest has also increased for the business from 0.2 to $0.3 million. Interest clearly increased because we took some additional bank loan, if you remember, for the expansion. And gearing ratio भी बढ़ चुका है. लिक्विडिटी का सीन ऑफ है एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा कम हो चुका है. ठीक है, कैलकुलेट क्या करना है. कैलकुलेट फॉर 2023-2024 द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन. फॉर्मूला याद है किसी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकालना है, क्या फॉर्मूला होगा. ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100. यस, नाइस सोमिल. फिर उसके बाद 2023-2024 ना, सेल्स कितनी है. सेल्स बताओ. सेल्स सेल्स है हमारी
रेवेन्यू दिया हुआ है 10.8 मिलियन का। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 0.5। कितना परसेंटेज आ रहा है बताओ? 0.5 डिवाइडेड बाई 10.8 मल्टीप्लाइड बाई 100 कितना हो जाएगा? 4.6%। वी कैन ऑल्सो राइट द फुल, पूरा भी लिख सकते हैं, या हम 1 डेसिमल पे भी लिख दें तो बात सेम ही है। द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन फॉर द करंट ईयर इज 4.6%। This means that 4.6% of the sales were converted into the operating profit। कंपनी ने अपनी सेल्स का 4.6% जो है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कन्वर्ट किया है। और लास्ट ईयर अगर हम देखना चाहें, इस साल तो चलो हमारा मार्जिन आ रहा है 4.6% ना। पिछले साल का निकाल के बताओ, ऐसे ही वैसे जस्ट फॉर अ कंपैरिजन। 4.6% तो इस साल का आ रहा है, तो पिछले साल हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या आएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 0.6 और सेल्स हैं 10। तो पिछले साल जो है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना था? 6%। डैम इट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नीचे आ रहा है। लास्ट ईयर था 6% एंड दिस ईयर आई एम मेकिंग द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 4.6%। और अगर मार्जिन कम हो रहा है, ये तो बैड चेंज है। प्रॉफिट मार्जिन का कम होना इसका मतलब है कि एक कंपनी अपने प्रॉफिट्स को इतना अच्छे से मेंटेन नहीं कर रही है। रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद, ज़्यादा सेल्स होने के बावजूद हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो रहा है। तो बहुत अलार्मिंग बात है यार। अगर आप सेल ज़्यादा कर रहे हो, ज़्यादा कस्टमर आपके पास आ रहे हैं, तो आपके तो फिर प्रॉफिट्स भी बढ़ने चाहिए थे। लेकिन ये रेवेन्यू बढ़ रहा है, खर्च तो क्लियरली मुझे लग रहा है कुछ खर्चों में सीन्स ऑफ लग रहे हैं। रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद भी हम जो है प्रॉफिट नहीं बढ़ा सके हैं। ठीक है, इस तरह से देख लो, वर्किंग्स मैंने शो की हैं, एग्जाम में भी तुम्हें प्रॉपर वर्किंग्स शो करनी चाहिए। ठीक है, पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी, कोई सवाल हो पूछ लेना। पार्ट बी, evaluate methods HCC could use to increase profitability। Evaluate methods HCC could use to increase profitability। ओके, ओके, सो ये कह रहा है कि अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे बेहतर किया जाए। 12 मार्क का सवाल है। 12 मार्क का मतलब है कि हमारे पास 1.5 पेज गिवन होगा ना। देखो, ये हाफ पेज और फिर ये फुल पेज। और ये बात भी याद रहे कि हम जब 12 मार्कर करते हैं तो उसमें इंट्रोडक्शन, पैरा 1, पैरा 2 एंड कंक्लूजन ना। स्ट्रक्चर तो अब हमें पता है। इंट्रो, पैरा 1, पैरा 2 एंड देन कंक्लूजन। इंट्रो में क्या डिफाइन करूं? प्लानिंग अगर कर लें लिखने से पहले छोटी सी, तो इंट्रो में क्या डिफाइन करूं? इंट्रो में क्लियरली आई विल डिफाइन प्रॉफिटेबिलिटी एंड कैसे इंप्रूव करें यार प्रॉफिटेबिलिटी। ये कह रहा है प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करने के मेथड्स बताओ, तो दो रास्ते बताने होंगे हमें। फॉल इन द कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड राइज इन द सेलिंग प्राइस, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जाहिर है अब हमें स्पेसिफिक्स भी जाने होंगे इसमें, पॉइंट्स में। जाहिर है अब प्रॉफिट अगर बढ़ाना है, प्रॉफिट अगर बढ़ाना चाहते हैं, हम प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर करना चाहते हैं, तो एक तो ये कि हम अपनी किसी तरह रेवेन्यू बढ़ाएं ना। या तो हम किसी तरह ये लिखें कि आप अपनी सेलिंग प्राइस को, रेवेन्यू को कैसे बढ़ा सकते हो। और एक ये हो सकता है कि हम कॉस्ट ऑफ सेल्स के कम होने की कोई बात कर लें, या एक्सपेंसेस के कम होने की कोई बात कर लें। या तो किसी तरह बताएं कि आप रेवेन्यू किस तरह बढ़ा सकते हो, मे बी प्राइस आप बढ़ा दो।
या फिर आप अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स कम करने की बात भी कर सकते हो कि कॉस्ट ऑफ सेल्स कम करने की प्रैक्टिस या किसी तरह लेकर आओ, कोई खर्चे कम करने की बात कर सकते हैं, वेस्ट एक्टिविटीज कम कर सकते हैं। कोई ऐसा पॉइंट लिखें जो इजी हो, इजी टू राइट हो, और उसके अंदर हमें थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट भी मिले ना, क्योंकि हमें केस से भी रेफर करना है। वी नीड टू नो दैट रेवेन्यू बढ़ाने के लिए प्राइस अगर बढ़ाएंगे तो उसके ऊपर फिर पूरी मुझे बात करनी है प्रॉपर। और एम्प्लॉयज के शशके कम करो, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है यार वैसे खर्चे बचाने के लिए। आई थिंक एक हम लिख सकते हैं किसी तरह अपनी सेल्स रेवेन्यू बढ़ाओ, और या तो हम लिख सकते हैं कॉस्ट्स कम करो। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हम कह सकते हैं कि आप अपनी प्राइस बढ़ाने की सोचो, कोई वैल्यू ऐड करो इसमें, कुछ ऐसी चीज़ जो कस्टमर फिर ज़्यादा पैसे देना चाहें। लेकिन प्राइस बढ़ाना भी मुश्किल होगा। क्यों प्राइस बढ़ाना मुश्किल है वैसे? लेबर प्रोडक्टिविटी भी बात लिख सकते हैं, कोई डिस्काउंट ऑफर्स लगा सकते हैं। वैसे ही हमारी टारगेट ऑडियंस लो इनकम है तो प्राइस बढ़ाना थोड़ा मुश्किल भी हो जाएगा, लेकिन लेकिन अगर हम प्राइस बढ़ा सकते हैं, हमारी इमेज बहुत अच्छी है मार्केट में, रेपुटेशन काफ़ी अच्छी है, जानते हैं लोग भाई हमें, तो शायद ना कस्टमर भी शायद लॉयल होगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कंपेटिटर भी आ गया एक नया, ये भी एक पॉइंट है। और कॉस्ट बढ़ गई है, कॉस्ट कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? या तो हम एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट कम कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट वैसे ही बहुत ज़्यादा है, बहुत शश के देते हैं हम अपने एम्प्लॉयज़ को, तो वहाँ से खर्चे बचाने की सोच सकते हैं। और प्लस थोड़ा सप्लायर हम सस्ता लेकर आए, फुल हम शशके वाला रिसाइकल्ड मटेरियल यूज़ करते हैं, लिखा था ना इसने, that HCC uses full high quality recycled, use premium recycled material, if you see this. So we can also switch to maybe we can also switch to maybe the cheaper suppliers, but definitely उसकी वैल्यूएशंस होंगी हर मेथड की। और प्राइस बढ़ाना मुश्किल इसलिए होगा क्योंकि कस्टमर जो है वो शायद भाग सकते हैं भाई, वैसे ही रूरल एरियाज की हम लो इनकम पॉपुलेशन को टारगेट कर रहे हैं। और रिसाइकल मटेरियल अगर हम ना यूज़ करें, हम थोड़ा सा नॉन रिसाइकलेबल यूज़ कर लें, पॉइंट है, अब जाहिर है इसके अगेंस्ट भी पॉइंट्स आएंगे, और अगर किसी पॉइंट के अगेंस्ट भी आ रहे हैं तो वो भी हम लिखेंगे ना, यही तो एवेल्युएशन है ना, हम सजेस्ट कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि आप ये कर सकते हो, और ये मेथड है आपके पास, इसके ये फायदे हो सकते हैं, लेकिन ये इसके फिर कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल। एंड आई थिंक फिर हमें कंक्लूड करना होगा, और कंक्लूड में हमें अपना ओपिनियन देना होगा। कौन सा बेहतर रास्ता है, रेवेन्यू बढ़ाने का टारगेट करें या कॉस्ट कम करने का? कॉस्ट है ना। क्यों रेवेन्यू बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं वैसे, कॉस्ट कम करने की बात कर रहे हैं, जस्टिफाई भी तो करना होगा ना फिर। जस्टिफाई भी तो करना होगा कि क्यों आप कह रहे हो कॉस्ट कम करो भाई। इलास्टिक डिमांड। इंटरनेशनल मार्केट्स वाला पॉइंट भी अच्छा है, क्योंकि वैसे ही कॉस्ट बहुत बढ़ रही है, रेवेन्यू तो फिर भी बढ़ा था, कॉस्ट ऑफ सेल्स आउट ऑफ कंट्रोल लग रही है, कॉस्ट ऑफ सेल्स काफ़ी स्पीड में बढ़ गया है, एक्सपेंसेस भी बहुत बढ़ गए हैं। कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन बर्दाश्त नहीं कर सकते, अभी वैसे ही कंपेटिटिव मार्केट है, तो प्राइस बढ़ाना तो है ही इम्पॉसिबल। और और फिर एडिशनल एडवाइस भी दे सकते हैं ना, एडिशनल एडवाइस भी याद है, अगर हम कंक्लूजन्स लिख रहे होते हैं तो कंक्लूजन में हम कोई एडिशनल एडवाइस भी इसको दे सकें कि भाई वैसे ही आप सोशल एंटरप्राइज हो, ऐसा ना हो जाए कि भाई आप ज़्यादा ही अपने खर्चे बचाने के चक्कर में या प्रॉफिट्स के चक्कर में आप अपनी रेपुटेशन ख़राब कर दो, ऐसा मत करना हर हाल में।
ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। So let's just start writing. I'll write an answer. You should copy this down. Just try to understand the techniques that we are using. So you can use these techniques later on in your exam. That is an important aspect. It's not just about copying and pasting, it's about learning how we are writing it. So when the next time the question comes, तो फिर तुम full ready हो, ठीक है? Profitability is one of the financial aspects of an organization. Profitability is one of the financial aspects of an organization which measures that how well a business is performing in a certain period of time, in terms of sales and profits that a business generates. One of the strategies, देखो पैराग्राफ चेंज कर रहे होते हैं तो बीच में लाइन नहीं छोड़ते, बहुत सारे बच्चे ना पैराग्राफ चेंज करते हुए लाइन भी छोड़ते हैं. One of the strategies that an organization can use to improve profitability is to increase sales revenue. This can be done if HCC decides to increase the selling prices of its cook bags, if it increases the selling prices of its cook bags and Wonder Stove. Is as HCC is having a very well established brand name and a strong customer base, it might be possible to charge a bit higher price. It might be possible to charge a bit higher price without much affecting loyalty. However, as HCC is mainly targeting lower income customers. HCC is mainly charging lower income customers in the rural areas. In the rural areas,
It might be difficult. It might be difficult to encourage them to pay a higher price for the products. To pay a higher price for the products. अच्छा जी, फुल स्टॉप के बाद अब नेक्स्ट पैराग्राफ. Another strategy that can be used by HCC. Another strategy that can be used by HCC to improve profitability. Another strategy that can be used by HCC to improve profitability is to cut down on their costs. Is to cut down on their costs. As it can be seen that the cost of sales increased by 15%. 15% था ना. कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारी कितनी बढ़ गई थी? 15%. As it can be seen that the cost of sales increased by 15% in the current year, even when the revenue increased by just 8%. This clearly shows that the cost is not well controlled. HCC क्या कर सकते हैं खर्चे बचाने? HCC can switch to cheaper suppliers to purchase material such as the use of premium recycled material can be substituted such as the use of premium recycled material can be substituted with cheaper non-recyclable material which can help control the increasing cost of sales. It can help control the increasing cost of sales. Also, the control on increasing staffing costs due to the soft approach used. Also, the control on increasing staff costs due to the soft approach also needs
to be controlled, also needs to be controlled in order to improve profits. बट सर नॉन रिसाइक्लेबल मटेरियल विल क्रिएट इश्यूज फॉर गुड सीएसआर मेंटेन्ड। ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि अगर हम ये नॉन रिसाइक्लेबल मटेरियल यूज़ करेंगे तो उससे हमारी इमेज ख़राब होगी। हाँ बिल्कुल, फिर मैं दायरा इसको जस्टिफाई करते हुए बताऊंगा कि फिर आप ये तो बिल्कुल हरगिज हरकत ना करना, ये तो मैंने ऑप्शन बता रहा हूँ कि ये हो सकता है। और एग्जाम में तुम इस तरह के पॉइंट्स लिख सकते हो, जाहिर है मना नहीं है, लेकिन फिर तुम उसको जस्टिफिकेशन में मत बोलना कि ये चीज़ करो। बट एक ऑप्शन तो ये है कि आप कर सकते हो। आप बहुत महंगा मटेरियल यूज़ करो, इसकी वजह ये है। Now you need to see that can you switch or you cannot switch. If you cannot switch, then yes, you should not switch. That's what it is. But as a point, we can always write it, right? Justify में नहीं करेंगे. Overall, in my opinion, the control on costs is the most suitable strategy. Yes, we can also give the negative views of our points. We can not a problem. We can just give a point. We can tell the positive aspect of it. We can tell the negative aspect of it also. That's also not a problem. बस जिस भी पॉइंट को लिखूं ना तो उसको मैं क्रिटिकली एनालाइज करूं, जज करूं, इवैल्यूएट करूं। ओवरऑल इन माय ओपिनियन द कंट्रोल ऑन कॉस्ट इज द मोस्ट सुटेबल स्ट्रैटेजी। दिस इज mainly because this is mainly because the revenue is increasing, but increase in costs is clearly unexplained. HCC will have to, मतलब HCC को टारगेट किया, जो कंपनी का नाम हो ना उसको टारगेट किया करोगे तुम, उससे बात करो। HCC will have to find a way to cut costs, but they must ensure that they are a social enterprise. No such decision, no such decision should be taken. No such decision should be taken that the mission, hinders the mission of an organization. The focus on controlling staffing costs is the most important aspect. The focus on controlling staffing costs is the most important aspect. The most important aspect. As it is a social enterprise, Abiba must consider that whether the profitability should be prioritized or should the profitability prioritize or the social objectives before making
any decision before making any decision. कंपेटिटर की तो बात ही नहीं की यार, बस काफी हो गया। वैसे ये भी लिख सकते हैं, इट माइट नॉट बी पॉसिबल टू इंक्रीज द प्राइस ड्यू टू इंक्रीज इन कंपटीशन, ये भी लिख सकते थे। सो बट आई गेस दैट्स इनफ for this question. Just copy this down, read it properly, proper copy करो, read करो, जरूरी है ये। ठीक है, प्रॉपर कॉपी कर लो, इसको रीड किया करो, आंसर जब लिख लो उसके बाद एक दफ़ा पूरा प्रॉपर प्रूफ रीड किया करो। ठीक है जी।